Hey Pinak, how are you? I'm fine. What about you? Yes, absolutely fine. Very excited for today's. What about you? I'm also excited. Okay, so first of all, our agenda, why are we doing this? So, as you know कि प्लेसमेंट सीजन्स आ रहे हैं एंड कई स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या करें क्या ना करें और अभी जून है तो आई गेस 1 मंथ ही बचा है उनके लिए। तो इस आखिरी के 1 मंथ में उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी अच्छी प्लेसमेंट हो सके एंड सम एडवाइस फॉर अवर जूनियर्स कि उनको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में क्या करना चाहिए so that they can have some good placement if they are placement interested students. Okay, so our discussion will be something like this, so please introduce yourself first. Uh, sure. So myself, Pinak, and I am currently working as junior software developer at SmartSense consultancy at Gift City. And basically, I do work on mostly the front end parts. And sometimes I have to consider points of Docker and some cloud issues. So that's it from that is all. Okay, great. So आपकी internship 7th सेम में start हो गई थी, right? Yes, my internship was basically started from the last year of my college. So I started from a very early stage where my most of friends were searching for job. So on that period, I started it, and right now I am the same company as a junior developer based on the Great. performance. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो हमको ये पूछना है कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, नंबर ऑफ राउंड्स, डिटेल ऑफ ईच इंटरव्यू एंड सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द इंटरव्यूज। Basically, there are it depends on the company that how many steps they want to take. So if the company has certain you may say that there are certain norms that they have to follow for the interview process. So basically, when I was being interviewed at SmartSense for my internship role, I had to go with you may say 4 stages. First was my pre-screening that basically includes our introduction and you may say that basic understandings of what I have done and what I can do and what I want to do. After that, there were coding rounds, and after that, there were HR rounds, and then there is just the last call, which basically gives you the idea that whether you are selected or not, and the financial things that we talk. So that are the rounds basically. But if you are considering a big MNC, they may have more rounds, basically more coding rounds and more FT rounds because the competition there is very big. So you have to consider that thing also, that where you are applying and where you want to go. It also depends on the role that you want to opt for the job or internship. Basically, when you are considering developer roles, there are more coding rounds, and if you are considering cloud roles, then there are no such coding interviews. There are basically logical questions that we Yes, need to but solve. level is very low. Yes, level is very low. The level is, you may say that they consider mostly the cloud preferences, not Okay. the coding things that we do Mhm. in normal studies, and so that's it. Mhm. So it depends on the company. That's Okay, all I want. so can you share exact questions or like topics about questions like DSMA Yes, King? Yes. I may share few things from my interview journey, and you may get the idea that what I want to say. So basically, when I started the pre-screening process, the pre-screening process is also important when you want to get into the company for further rounds. So if you are not clearing the first stage, even you are not able to show your coding skills, your DBMS, your OS, and such. So basically, the Just a first. second. Sorry for interrupting you, but it means if you even if you have good coding skills, if you are not able to pass the aptitude, then it is useless, right? Yes, yes, yes. Okay. I really want to say that Hmm. firstly, you just need to consider your communication skills first, Hmm. whether it be any language. If you are not opting for an MNC, you may go for your mother tongue or Hindi. And if you Hmm. are opting for MNC, it is preferable to know English, but Hindi is good at certain points. So work on that.
starting from that. After that, the second round basically consists of your aptitude, math skills, reasoning skills, and all. Mm-hmm. So these things can be prepared in, you may say that, a week or so, if you are Okay. if you are dedicated to that portion only. Mm. So it will be done by a week, and after that the main things come. So if you want to go for a developer role, then coding skills are very important, Okay. and that too, you have to know that where you are applying. Mm. So if the number is big, uh, the questions will be from mostly tree, graph, DP, that Mm. kind of stuff. If the competition is low, or you may say that the candidates that you are competing with are around 100, and the company is not an MNC but a basic workaround, so they prefer the questions easy. Easy in Okay. the sense they will go for the string level, array level, linked list, and such, which Okay. तो are basically more logical and not that much hard, while the MNCs mainly prefer algorithms and their far utmost precise coding, which have the most efficient output. So this is all, and after that you have HR interview. So coding round, you may say that they totally depend on the luck and your practice. But HR round mainly prefers on your communication skills and how honest you are. The more honest you are, the more attracted HR will be towards you, and more the chances of getting selected. So, let me tell you the questions that I got from the HR. That what is my family background? First question was, what is my family background? okay. So that question was out of context. I Mm. was not open for the first question, that they will ask me for my family background, not for me, that what I do, what I want to do. Okay. So that thing surprised me, and after that I had few other questions like, what do you do, what are your habits, what do you do for improving your habits, what do you Mm. do for improving your skills. So those were the questions, and you may say that I was confused after the HR interview, that they took an interview, or they just want me to introduce myself. Like there were family questions. Yeah, what do you do for your free time? Like, do you play cricket? Do you play any sports? Okay. What, how honed you are in that skill? How preferably you play cricket? Like that kind of questions. Okay. So my HR was really frank, and I had a great time. But uh, in the opposite, I also have my friend who was going through the same process, and he was rejected in HR round. But Okay. he also don't know that why he was being rejected. But at a certain point, you may say that the reason, or the his reason for rejection, maybe he had spoke the words that he has read, like he has prepared for an HR. Okay. So like, if I ask you that what are your SWOT, so Mm-hmm. you will be preferring to answer your SWOTs based on the current scenario, Yes. not like the you may say that the रट्टू पोपट, Mm-hmm. कि जो उसने रीड किया है वही वो बोलेगा. Yes. Okay. So do not do that in HR. HR Okay. में calm down your mind, do not read anything, be yourself. Okay. और coding में basically there are, basically clear your all aspects, logical aspects. Okay, you don't need to do more algorithms, more stuffs. Do the basic algorithm things, and you will clear it out in a mid-scale companies. So that's it. ओके ग्रेट सो प्रिपरेशन के लिए आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे एंड कब स्टार्ट की थी मतलब एकदम कि अब तो सीरियस होना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए तो डेडिकेटेडली कब आपने स्टार्ट किया था एंड रिसोर्सेज कौन से फॉलो I किए थे was, you may say that I was pretty late for my process too, because due to COVID and stuff, I was kind of unaware of what to do for my placements. So I started around 6 months prior, which too that I was not dedicated. I was dedicated for the last 3 months before my completion of my interview process. So in that 3 months, I started with my communication skills. After that, I started my coding things. And aptitude is a thing that if you are starting before 3 months or 4 months, you just give 1 to 2 hours a day, do it dedicatedly,
and it will be all that you need. So Yes. that's all for apti. And I my resources were more preferably the YouTubers, because at the For end example, uh, is the love babbar and striver were the best at driver my is time. awesome. Yes, yes. So they are the tools that I followed for around 3 months, and based on them I cleared my coding rounds. Okay. So if you want to the start, like you have not done any coding stuff and you have not done anything yet, but you still want to start before 3 months, 1 month, just start with basic stuffs. Go with the oops. After completing your oops portion, go with one preferable language that you want. Sorry for interrupting, but for the oops, I guess Love Bubber roadmap is awesome. Yes, it is. Yes, it is. So Yes, Lovebubba's hoops, there is his whimsical diagram, yes, yes. which consists of all the things of hoops, and after that, but it is C++ based. Hmm. First, Hmm. find your language that in which you are comfortable with, and Hmm. hoops are, you may say, that the four pillars which all language prefers. So Hmm. I Great. say that go with the hoops, have one language, focus on that, and based on that, start preparing questions. But do not ever go for lead code if you are in initial stage. Go with Hacker rank is good, I guess. yes. For initial ones, HackerRank is good. After completing your preferred language, HackerRank questions, go for further. You may say that questions like you may go Le- for code safe, lead code, make it last. And if you Okay. want to go with the after HackerRank, you certainly want to start lead code. Go with the easy questions, and never ever spend more than 1 day on one question, whether it be easy, hard, or medium. If you are Yes. not completing it by 1 day, second day, second question, and you will be referring to first questions, the videos and stuff, Hmm. where Hmm. you will be clear with the ideas. Do Okay. not code it till then when you have the idea. Okay. ओके सो Do not. जस्ट अ सेकेंड। Uh, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की प्रिपरेशन अगर करनी है प्रॉब्लम सोल्व करने हैं तो कैसे करते हैं। तो uh, ओके तो मैक्सिमम एक दिन देना चाहिए एंड देन यू कैन जस्ट सी द Move on to other question. सॉल्यूशन। यस ओके प्लीज कंटिन्यू। Sorry, move on to other question. But do not submit your first question. हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन तभी सबमिट होना चाहिए जब you are completing it without you may say that without seeing any videos on other tab. Like हम्म। many of the students prefer that कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो दूसरे टैब में यूट्यूब ओपन है, इस टैब में मैं कोडिंग करूंगा. Do हम्म। not do that. Just make yourself clear. Okay, first clear yourself, after that take 2 to 3 days rest for that question, ग्रेट। and after 2 3 days do that question, try that question. DBMS OS, preferably these two subjects should be and are focused in our college too. Basically, यस Saruset gives so much importance to those two subjects, DBMS and OS. They do, they want to give you NPTEL things, they want to give you other ऑसम। extra resources. मुझे जब मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था तो उसमें DBMS के क्वेश्चंस थे. Basically, they were SQL queries that I have to write. So mostly focus on aggregate queries. तो जिसमें aggregate functions आते हैं. I cannot say the exact queries that they ask, but go on aggregate functions, go on high level queries like nested queries, aggregate queries, like function queries. So go on that. हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ इंटरव्यू। Basically, mock interviews are nothing but you may say that uh, a place, or you may say that a stage. अगर आप में स्टेज फियर है तो आप में इंटरव्यू फियर है, स्टेज फियर नहीं है तो इंटरव्यू फियर नहीं है. और उसके अलावा तो इंटरव्यू में कोई डरने की बात नहीं है. आपने 4 साल इंजीनियरिंग की है तो क्यों ही डरना. And actually interviewer coming in your college to hire you, not to हाँ reject मतलब, you। हाँ उनको भी आप मतलब चाहिए इसीलिए वो आते हैं. तो अगर उसमें हाँ। आप डरोगे तो वो ऐसा सोचेगा कि भाई इसको मैं लेके जाऊंगा, इसको अगर इसको ज्यादा कुछ आता भी है, इसको अपॉर्चुनिटी दूंगा तो मैं हम्म। कैसे दूंगा. कि बेसिकली अभी top with अभी मेरा ये है कि मैं अभी फ्रंट एंड डिपार्टमेंट में हूँ. तो मेरा जो अभी करंट प्रोजेक्ट है वो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स है. तो द क्लाइंट प्रीफर्स टू टॉक विथ अस वन टू वन. हम्म। he prefers to talk with us in a meet of group. तो मुझे बोलना पड़ता है. अब अगर मुझे सब कुछ आता है एंड आई कैन नॉट कन्वे द मैसेज, आई कैन नॉट स्पीक एट द राइट टाइम,
तो वो मतलब बेकार है सब कुछ। तो हम्म। इंटरव्यूअर बेसिकली सीज दैट ओनली। वो टेक्निकल स्किल्स तो मतलब अगर आप इंटर्नशिप और उसके बाद जॉब में जा रहे हो, सीख ही जाओगे वो तो आप कभी ना कभी। हाँ, तो आपको जो सीखना है, आपको जो टेक्नोलॉजी में वर्क करना है, वो कंपनी वाले सिखा नहीं वाले। हम्म। बट द थिंग इज कि आप कन्वे कैसे करते हो, तो उसके अलावा तो कुछ नहीं। और वो आपको लेने आ रहे हैं तो उनको तो उतना ही चाहिए कि भाई मैं इसको लेके जाऊंगा, ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन आप में भी वो होना चाहिए कि आप कैसे दिखाते हो। हाउ टू फाइंड ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले ये बताओ कि लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन यूज़ कब से स्टार्ट करना चाहिए, एंड हाउ टू फाइंड लिंक्डइन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। लिंक्डइन तो देखो भाई, अगर आपको प्लेसमेंट ही चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। हम्म। जितना हो सके उतना लोगों से कम्युनिकेट करो, कनेक्ट करो, अपनी पोस्ट को जितना हो सके उतनी रीच बढ़ाओ। लाइक ये अभी ये मतलब टिकटॉकर्स वाले या रील्स वाले बोलते हैं ना, लाइक कमेंट शेयर, बस वही करना है, लेकिन लिंक्डइन पे करना है और अपना नॉलेज दिखाना है, प्रोफेशनल ना वे में। कि हाँ प्रोफेशनल वे में, ना कि ये नाचना गाना। तो वो करो, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो। और फर्स्ट ईयर से जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपका जब तक प्लेसमेंट का टाइम आएगा, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। हम्म। और बाद करियर्स साइट्स हैं सभी की, हम्म। सभी से अप्लाई करो। रिजेक्ट होने ही वाले हो, पहली बार में किसी का नहीं होता है, रिजेक्ट होने ही वाले हो। पहली बार में हो जाए, गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो, दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। लेकिन अगर रिजेक्ट होते हो, मतलब रिजेक्ट तो होना ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम्म। तो ऐसे मतलब बैठ नहीं जाना है। रिजेक्ट होते हो, अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बहुत अपॉर्चुनिटी। लिंक्डइन पे कभी सर्च करो, आपको ऐसा लगे तो उसका पहले तो मतलब आपको ऑन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स जिसके साथ आपने 11th-12th किया और जो अच्छी कॉलेज में। आस्क देम द कंपनीज कि भाई तेरे में कौन सी कंपनीज आती है, हम्म। तेरी कैंपस में कौन सी कंपनी अच्छी है। अप्रोच देम, फर्स्टली अप्रोच देम, क्योंकि वो आपके दोस्त है। हम्म। तो वो आपको सही बताएंगे कि मेरे में ये आती है, ये इतना देती है। तो ऐसे अपने दोस्तों से पहले पूछो कौन सी कंपनीज में अभी आप जा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज लेके कौन आ रहा है। क्योंकि देखो गूगल आई थी मेरे टाइम पे, गूगल तिरुभाई में आई थी, मेरी बहन उधर थी। तो गूगल विथ गूगल वॉज ओपन विथ मोर देन 20 अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। हम्म। लेके गई एक ही इंसान। ओके। तो 20 अपॉर्चुनिटीज है, एक को लेके 19 खाली है, अभी भी खाली है। हम्म। नो वन इज फीलिंग दैट गैप। तो उससे बात करो ना कि भाई ये कौन सी अपॉर्चुनिटी लेके आए थे। गो ऑन देयर साइट, ग्रेट गो ग्रेट। ऑन गो ऑन फॉर सर्चिंग द जॉब्स, कि आपको जो प्रिफरेबल रोल है, आपको लग रहा है इसमें मैं अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा अप्लाई, होना नहीं होना दूसरी बात है। और अगर आप ऐसे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो मेक योर रिज्यूमे विथ मोर कीवर्ड्स, जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना अच्छा है। टेक्निकल jargons इन शॉर्ट्स। हाँ, यू में से तो दैट इज द थिंग। और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज मतलब ऐसे ढूंढनी इजी पड़े कि आपके दोस्त होंगे, मोर देन यू में से दैट 10 कॉलेजेस में तो होंगे ही। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो भी 10 कॉलेजेस में तो होंगे ही। और इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ नेटवर्किंग। सो मतलब हमने कहा कि फर्स्ट ईयर में हाँ नेटवर्क बिल्ड करो, सो उसी से ये सब हाँ होगा। हाँ। ओके। और मतलब ओपन टू योर इवेंट्स ऑफ कॉलेज, जितने हम्म। भी टेक इवेंट्स होते हैं, जितना भी होता है, बी पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट। जितना भी हो सके उतना पार्टिसिपेशन करो, हम्म। अपना नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क ओके। जितना बड़ा होगा उतनी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आपके पास जल्दी आएगी। हम्म। अगर आप एक बार ओपन टू वर्क डाल रहे हो और आपकी वो चीज़ 100 लोग देख रहे हैं और सामने 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 में से 10 बंदे ऐसे होंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, और 100 में से सिर्फ एक ही बंदा होगा। और हम्म। उसमें भी आपके चांसेस बहुत कम है कि इफ यू आर बीइंग एक्सेप्टेड और रिजेक्ट। लेकिन हम्म। 10 में से एक में तो ऐसा चांसेस लग ही जाएगा कि यू आर बीइंग एक्सेप्टेड। ओके। ग्रेट। तो स्टार्ट अर्ली विथ योर नेटवर्किंग स्किल्स। और उसमें भी मैंने जैसा बोला कि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। आपको हम्म। एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, बी फ्रैंक विथ अदर्स, पुट योर ट्रस्ट ऑन देम। जितना आप ट्रस्ट रखोगे उतना वो सामने आपको ट्रस्ट देंगे। एंड इट इज द बेस्ट पार्ट व्हेन यू आर डूइंग नेटवर्किंग। तो ओके। यही करो फिर। तो भी फाइनल क्वेश्चन कि जिसके पास अभी 1 मंथ बचा है प्रिपरेशन के लिए, ये नहीं कह रहा कि जिसको कुछ आता नहीं है और 1 मंथ के अंदर ही प्लेसमेंट करना है, आता है ऑलरेडी, तैयारी चल रही है, लेकिन अभी भी 1 मंथ है, तो उस लास्ट के 1 मंथ्स में क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको मतलब, let me share the experience of my juniors, and I also want to convey that message to them also.
बिकॉज जिनको मैंने पर्सनली बोला है कि भाई ये कर, उनका टाइम अभी आ गया है, वो अभी अप्लाई स्टार्ट कर दे ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस की राह नहीं दी। आप ऑफ कैंपस ट्राई करो, यू आर बीइंग रिजेक्टेड, नो वरीज। कॉलेज में कोई पूछने वाला नहीं है, कॉलेज में तभी पूछेगा इफ यू आर बीइंग एक्सेप्टेड, हम्म। रिजेक्ट हो गए कोई नहीं पूछेगा। तो वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड स्टार्ट विथ स्मॉल कंपनीज, नेवर गो फॉर बिग एमएनसीज, क्योंकि उसमें कूल डाउन पीरियड होता है। इफ यू आर टारगेटेड इन दैट, तो आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 1 साल बिगड़ेगा, या तो फिर 6 महीने, या उनका जो टाइम पीरियड होगा कूल डाउन पीरियड वो। तो वैसा मत करो, गो फॉर स्मॉल कंपनीज और मिड स्केल कंपनीज विच पे यू एज पर मार्केट 6 to 8 lakhs, हम्म। इज द रेंज। उस कंपनी में अप्लाई करो। इफ यू आर बीइंग रिजेक्टेड, कोई दुख नहीं है, बहुत सारी कंपनी है, अगली कंपनी पकड़ो, फिर से अप्लाई करो। इफ यू आर बीइंग एक्सेप्टेड, क्या पता कल आप 10 लाख में बैठ जाओ। हम्म। 10 LPH इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और ऑफ यस। कैंपस है, तो ऑफ कैंपस में अगर आप HR तक पहुंच गए, तो आप में टैलेंट बहुत है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। उस वक्त HR आपको वही बोलेगा जो करंट वो लोग कॉलेज से हायरिंग करते हैं, वो अमाउंट बोलेगा। लाइक हम्म। अगर मैं ही हूँ, मतलब सपोज टेक मी एज अ फ्रेश, आई एम गोइंग फॉर ऑफ कैंपस, आई एम बीइंग सिलेक्टेड, वही कंपनी कैंपस में आके बोलती है कि 6 लाख देंगे हम। और ये हुआ है, बट आई कैन नॉट से द नेम्स। हम्म। तो कंपनीज कॉलेज में आके बोलती है कि मैं 6 दूंगी, बट द थिंग इज आई एम बीइंग रिजेक्टेड ऑन कैंपस, और मैंने वही कंपनी में वापस से अप्लाई किया ऑफ कैंपस, आई गॉट सिलेक्टेड, और उन्होंने बोला कि आई विल गिव यू 6, से नो टू दैट। ओके। मैंने अपने मतलब बलबूते पे किया है, तो आई विल बी टेकिंग 7.5, जो भी मतलब। और उसमें भी ऐसे फेक अमाउंट मत बोल देना कि मुझे 12-13 चाहिए। अरे भाई, वो कंपनी 6 दे रही है, तो उसमें तू 12 मांगेगा तो वो नहीं देने वाली है। हम्म। दे कैन नॉट गिव यू 2x मनी, यस। बिकॉज द सेम कॉलेज में उसने बंदे ने 6 लाख, तो तुझे भाई क्यों 12 देगी। तो हम्म। गो विथ अराउंड 1 लाख इंक्रीमेंट, 1.5 इंक्रीमेंट, हम्म। कितना मतलब। गो विद द कंपनीज बैकग्राउंड टू, कि उसका बैकग्राउंड कितना बड़ा है, उसका बैकग्राउंड है, तो से 2 लाख मोर। एंड ऑल्सो डू नॉट गो ब्लंट, उनको हम्म। ऐसा बोलो कि लाइक मैंने ये सब ना किया है, सो आई एम होपिंग फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ माइंड, ऐसा करके बोलो। टॉक रखो, नेवर गो विथ फ्लो दैट सामने वाला कुछ बोले ही ना। ऐसा मत बोल हम्म। देना कि मुझे तो 8 चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, सिर्फ हाँ या ना उसका आंसर नहीं होना चाहिए। हम्म। इट शुड ऑलवेज बी कि वो आप आप जो बोल रहे हो उसका आंसर एक सेंटेंस में दे। तो दिस इज द नेगोशिएशन प्रोसेस जो फॉलो करनी चाहिए। तो लाइक गो विथ कैन यू गिव मी एन अमाउंट ऑफ 7.5, ऐसा पूछो। बी पोलाइट, तो वैसा बोलेंगे कि वी कैन थिंक ऑन इट। तो गो विथ अनदर क्वेश्चन लाइक हाउ मच डू यू थिंक दैट एट मोस्ट यू कैन ऑफर। हम्म। तो वह सामने से बोलेंगे कि एट मोस्ट वी कैन गिव यू 7, तो स्टिल यू आर इन 1 लाख प्रॉब्लम। ग्रेट। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। सो मोटो यही था कि जिनका प्लेसमेंट अभी बाकी है और फाइनल एक के पास बचा है, उनको कुछ ऐसा एडवाइस। रहेगा कि टेंशन नहीं लेना है, हम्म। बाकी है बट नेवर एवर मतलब यस, फील होप सैड, नहीं छोड़नी चाहिए। यस। होप नहीं छोड़ना है, अप्लाई करो। और अगर आप में टैलेंट होगा, लक नहीं होगा, तो भी आप रिजेक्ट होंगे। तो मेरे साथ हुआ था, मुझे जहाँ ओके। पे सिलेक्ट होना था आई वॉज नॉट सिलेक्टेड दैट, कि मेरा लक नहीं था। सेकंड कंपनी आई गॉट सिलेक्टेड, और पूरी प्रोसेस में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि सामने कंपनी को भी लगा कि भाई इसको रिजेक्ट, कि भाई ओके। इसको आने दो, हर राउंड आने दो। तो वो भी होता है। तो बस ऐसे टैलेंट हो और रिजेक्ट हो रहे हो, डू नॉट गो फॉर यस, स्मॉल कभी ये थिंग्स। नहीं सोचना कि अगर चाहिए। यस, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम नहीं है और वो सब। हाँ, अभी अगर ऐसा होगा कि मतलब बहुत सारे होंगे इसमें टैलेंट है, लेकिन दे आर नॉट बीइंग हम्म। सिलेक्टेड, तो वो ऐसा सोचेंगे कि भाई 3-3.5 की कंपनी आ जाएगी, मैं अप्लाई कर दूंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा। कोई होगी छोटी सी, ये अहमदाबाद का साइड की होगी, कहीं पर नडियाद साइड की होगी, आनंद साइड की होगी, करो अप्लाई, नो डाउट प्लेस भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि आपकी वैल्यू उतनी है। हम्म। वैल्यू तभी डिसाइड होगी जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करोगे। हम्म। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई मेरा 6 लाख में नहीं हो रहा है, तो 4.5 में प्लेस हो गया, बस खत्म। हम्म। 4.5 में भाई तेरा प्लेसमेंट हुआ,
जिंदगी खत्म नहीं हुई अभी। जो तुझे चाहिए था उसको मत भूल। गो फॉर ए- 6, गो फॉर 7, गो फॉर 8। अगर मैं, मुझे भी उतना मतलब, मुझे भी सब कुछ पता है कि लव गोबर का ये क्वेश्चन करो, ड्राइवर की ये क्वेश्चन करो, डीबीएमएस करो, ओएस करो, अमेजोन में हो जाएगा। पता है, मुझे भी पता है। लेकिन भाई अभी मेरा कैलिबर वो नहीं है, तो मैं सीधा ही उधर जाऊंगा तो रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। हम्म, और उसकी सोच में मैं इधर रिजेक्ट हो रहा हूँ, वो अलग है। कि मैंने इतना उसमें प्रेफरेंस दिया है कि इधर में कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरे हाथ लेकिन से 6 की गई, 5 की गई, 4 की हम्म, गई, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो बस एक बार स्टार्ट करो। लेकिन ये बात है कि आप अगर बड़ा गोल रख के फिर प्रिपरेशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा अच्छा। गोल गोल बड़ा रखना, और हम्म, गोल को अचीव करने में पूरी प्रोसेस को भूल जाना, ये अलग बात। हम्म, गोल बड़ा रखो, प्रोसेस होगी। आप 6 में भी प्लेस हो रहे हो, 7 में भी हो रहे हो, 8 में भी हो रहे हो, वो सब होगा। आप सीधा ही 24 पे पहुंचोगे, हार्ड लक है। टैलेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप परफेक्ट हो तभी होगा। हम्म, और उसके अलावा अगर उसके मतलब कुछ ऐसा है कि आपके जो मतलब बोलते हैं ना कि ये लक है आपके साथ, तो उसके अलावा भी आपका हो जाएगा। लेकिन भाई हम्म, पहले प्रोसेस में रहो, सिर्फ उसका ही मत सोचो। कंपनीज आती है, अप्लाई करो, गेट एक्सपीरियंस, उसके बाद करो, सब होता है। अगर ओके। मैं मतलब आई एम योर सीनियर, तो मेरे भी सीनियर्स हैं जो सिंफॉर्म में प्लेस हुए हैं, फिर क्रेस्ट में प्लेस हुए, सॉरी, दे टू आर करंटली वर्किंग इन एमएनसीज एट बैंगलोर। हम्म, वो 4 years डाउन द लाइन है। उन लोगों में वो कैलिबर नहीं था एट एन इनिशियल स्टेज। हम्म, लेकिन when they मतलब उन लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट तो करी, उनका भी गोल हम्म, तो एमएनसी ही था। क्योंकि हम्म, अगर आपका गोल एमएनसी होगा तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद उसमें ही दिखोगे। अगर आपका गोल ही ऐसा है कि भाई मुझे छोटी कंपनी में रहना है, फैमिली के साथ रहना है, ये करना है, वो करना है, तो आप उसमें ही रहो। गोल बड़ा तो रखना मैं उन चाहिए। लोग, हाँ, तो अगर मतलब 4 years डाउन द लाइन वो बंदा अप्लाई कर रहा है बड़ी कंपनी में, तो उसके दिमाग में 4 साल से वही था कि भाई मुझे एक दिन इधर जाना है। लेकिन उसने प्रोसेस को बंद नहीं किया। उसने ऐसा किया कि भाई मैं सिंफो में 4:30 में हो रहा हूँ, ठीक, अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, मेरा एक्सपीरियंस काउंट होने लगेगा, मेरे पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। ये सब ध्यान में रख के करो। Okay, thanks a lot for giving your time. It was wonderful conversation with you. कुछ भी अगर हो तो यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई लिंक्डइन एनी टाइम। Okay, great. Thanks a lot. Bye bye. बाय बाय।